Students, in previous part we have studied about different types of fungi. How the different types of fungi, four types of fungi are different from each other. There are the four, and there are the some major causes also on which we can differentiate between these different types of fungi. What are features? Phycomycete, Ascomycete, Basidiomycete, and Deuteriomycete. The number one feature is mycelium. माइसीलियम, इनमें माइसीलियम कैसा होता है? फाइकोमाइसिस के अंदर माइसीलियम जो होता है एसेप्टेट होता है, सिनोसाइटिक होता है, एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक मीन्स द सेल विच कंटेन टू न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड जो भी कह सकते हैं। एस्कोमाइसिस सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सेम एज इन बेसिडियोमाइसिस, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। Deuteriomyces septate and branched. Mycelium, on the basis of mycelium, these are different types of fungi. Next one is asexual reproduction. Asexual reproduction. किस मोड से होता है? फाइकोमाइसीट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा होता है। जूस्पोर्स और स्पोरेंजियोस्पोर यानी अल्पेनोस्पोर्स भी बोल सकते हैं, इनके द्वारा होता है। एस्कोमाइसिस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया, और बेसिडियोमाइसिट्स के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इनको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें एब्सेंट। एंड ड्यूटेरियोमाइसिस कोनिडिया, ओइडिया भी हो सकता है इसमें। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसीट्स के अंदर एसेक्सुअली भी होता है, सेक्सुअली भी होता है। सेक्सुअली किसके द्वारा? जाइगोस्पोर्स, ये था जूस्पोर्स, जाइगोस्पोर्स एंड oospores, जाइगोस्पोर्स एंड oospores। एस्कोमाइसीट्स एस्किडिया या एस्कोस्पोर भी बोल सकते हैं, एस्कोस्पोर्स। बेसिडियोमाइसिट्स बेसिडियोस्पोर्स। But sexual reproduction is not present in deuteriomyces, absent. Next one is fruiting body. Fruiting body कि फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट है या नहीं है। फाइकोमाइसिस और ड्यूटेरियोमाइसिस, इनके अंदर फ्रूटिंग बॉडी एब्सेंट होती है, इन दोनों में प्रेजेंट होती है। एब्सेंट प्रेजेंट, लेकिन कहां पे? एस्की जिसको बोलते हैं, एस्की, और ये बेस्की, और इसके अंदर भी एब्सेंट। These are the major factor on which we can differentiate between different types of fungi.
mycelium, asexual reproduction, and fruiting bodies. Next one, Robert Whittaker. In Robert Whittaker classification, 5 classes. कौन कौन सी थी? Monera, Protista, fungi, Plantae, and Animalia. We have already studied about these 3 types of categories. Which one? Monera, Protista, and fungi. Plantae. We will study about Plantae and Animalia in chapter number 3 and chapter number 4. Next one, there are some other organisms rather than Monera, Protista, fungi, Plantae, Animalia, which are not categorized by Robert Whittaker. Those are viruses, viride, and lichens. There are some other organisms which were not categorized in Robert Whittaker kingdom. Those are viruses, viride, and lichen. We will study about these type of microorganisms, viruses, viride, and lichen now. First one, viruses. कि viruses हैं क्या? The term virus was coined by Pasteur in 1880. The term virus was coined by Pasteur in 1880. Clear? The study of virus is known as virology. The study of virus is called virology. Name the term by which we can study the virus, virology. अब virus को है, virus are the some other organism which were categorized into the and they are put on the border of the living and non-living. These are the microorganisms which kept at the border of living and non-living. क्यों इनको लिविंग और नॉन लिविंग बेस पे कैटेगराइज किया? क्यों किया यार? कोई इनको ऐसा फीचर्स है जो लिविंग में भी शो करता है, कुछ ऐसे फीचर्स नॉन लिविंग को शो करते हैं. वो नॉन लिविंग फीचर्स क्या है इनके अंदर? इन वायरस फर्स्ट वन, द सेल वॉल इज लैक. इसमें सेल वॉल की कमी होती है. सेल वॉल इज नॉट प्रेजेंट. प्रोटोप्लास्ट जो होता है नेक्ड होता है. नेक्ड प्रोटोप्लास्ट. मीन्स लैक ऑफ सेल वॉल. नंबर 2, they don't show respiration. Do not respiration. Number 3, they don't have the property to store the energy. They do not have the ability to store energy. Growth and development cannot be also seen outside the body. Growth and development not seen.
not seen. So these are the features on which we can categorize the virus on non-livings. But there are some other features on which we can categorize the virus in living beings. Those features are features of virus लिविंग बींग्स, यानी वो फीचर जिसके बेस पे वायरस को लिविंग बींग्स में काउंट किया जाता है। क्या? जैसे किसी सेल के अंदर होस्ट सेल में एंट्री करते हैं, दे स्टार्ट टू मल्टीप्लाई इट्स नंबर, दे मल्टीप्लाई देयर नंबर्स as they enter into the host cell. Means वही होंगे, वही अपनी संख्या बढ़ाएंगे जो लिविंग बींग्स हैं। They causes many types of disease in plants and animals. They cause many disease, बहुत से रोग फैला सकते हैं, जैसे कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंजा है, चिकन पॉक्स है, मम्स है, एड्स है। फॉर एग्जांपल कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्स, chicken pox and AIDS. These are the features on which we can categorize the virus on living beings. Viruses are the organism which we put kept on the border of living and non-living by these features. And next one, the term virus was coined by Pasteur in 1880. The next scientist was D.J. Ivanovsky. इसने भी वायरस के बारे में कुछ बताया, D.J. Ivanovsky. In 1892 क्या प्रपोज किया? He said that he recognized these are the organism which affect the tobacco plants, which affect the mosaic disease in tobacco. He recognized and proposed that they affect or cause the disease in disease mosaic in tobacco. यानी इसी बेस पे इनका क्या नाम रखा गया? TMV, टोबैको मोजाइक वायरस. He also showed that viruses are smaller than बैक्टीरिया. कैसे? जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर था उनमें से ये फिल्टर हो गई, यानी बैक्टीरिया जिसमें छन नहीं पाता उसमें से छन गए. इसका मतलब these are the smaller than the bacteria because they filter through the bacteria proof filter. This was proposed by D.J. Ivanovsky. And the next one is M.W. Bezrynek in 1898. He also proposed some features about the viruses. क्या शो किया? He said that the mosaic virus का जो fluid होता है that can affect the healthy person, healthy animals. This fluid was known as Contagium vivum fluid. He
proposed that the fluid of TMV, बोले तो tobacco mosaic virus may affect or may cause infection in a healthy person or animal and was called, क्या called, ये फ्लूइड को कॉल किया गया, फ्लूइड को बताया गया and was called contagium vivum fluidum। मीन्स वो फ्लूइड जो इन्फेक्शियस लिविंग बीइंग को काज कर रहे हैं, लिविंग बीइंग को इन्फेक्शन कर सकता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, इन्फेक्शियस फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, एंड नेक्स्ट जो इसके ऊपर स्टडी की गई क्या, WM Stanley in 1935 he proposed that the virus can be crystallized, वायरस को क्रिस्टल में चेंज किया जा सकता है। He showed that viruses can be crystallized the crystal virus is contained protein. This was the study taken about the viruses. The study of virus is known as virology. Term virus was coined by Pasteur in 1880. About the virus, some disease may also can cause, just like as DJ Vanesco. What was DJ Vanesco proposed? DJ Vanesco proposed that the virus can affect the mosaic disease in the tobacco, and he also proposed that virus are smaller than bacteria because virus can filter through the virus, bacteria filter proof. And next, M.W. Pezrenic in 1898 he proposed that the fluid which affect the tobacco, that fluid is known as contagium vivum fluidum or infectious living fluid. And last one is Stanley, W.M. Stanley in 1935 he showed that virus can be crystallized and these crystals of virus are made up of protein. Clear?